Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the weekly market analysis. आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स को ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एंड डिस्कस करेंगे द मार्केट आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे दैट्स मार्च 18th 2024। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Notification bell को ring करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा so that you never miss an update. चलिए without any further ado शुरू करते हैं आज का वीडियो with the weekly time frame of Nifty 50. First of all, this bullish streak in Nifty 50 has come to an end and जैसे कि हमने previous weekly market analysis video में discuss किया था that the level of 22,555 is a strong resistance for Nifty 50, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं that from the same levels हमें Nifty में सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है। ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट फ्रॉम द हाइज आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन द चार्ट्स डेवलप हुआ है, दैट इज द बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। नाउ गिवन द फैक्ट दैट वी हैव विटनेस्ड a 2.09% decline in this particular week, so what might happen over the course of the coming week? Now, first of all, on the daily chart, Nifty has been holding on to this particular low of 21,905. And जब तक this low is held, हम sideways action Nifty 50 में expect कर सकते हैं. But in case this particular low is taken out, so given the decline that we have seen, इसके चलते हमें further निफ्टी में डिक्लाइन कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 21,830 to the levels of 21,666. Also, not to forget that this particular zone that we've just discussed happens to be a strong support on the technical charts. निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिलेगा दैट हमारे पास यहाँ पर 20 and 40 EMA ऑलरेडी प्लॉटेड है ऑन द चार्ट्स एंड हियर यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटिफुली दिस 40 EMA हैज एक्टेड एज अ एरिया ऑफ सपोर्ट इन द past as well. So here as well, you can clearly see that Nifty 50 is placed right above the 40 EMA. So यहाँ पर chances are that we might as well see support action on the charts. Now, considering such a wide candlestick in Nifty 50, the range for which is spread across 22,446 to 21,905, हमने यहाँ पर बात की थी दैट हमें साइडवेज एक्शन कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है एंड यू कैन क्लियरली सी दैट ओवर द लास्ट 2 trading sessions, Nifty has consolidated within the range of this wide candlestick itself. Now over here, another interesting development is that हमें एक inside bar setup देखने को मिल रहा है, the range for which is placed at the levels of 22,004 to the levels of 21,917, but more or less हम यहाँ पर 21,905 के level को refer करने वाले हैं because just like we discussed on the weekly charts as well, that this level happens to be a very strong area of interest. Now, generally जब हमें ऐसे narrow range setups देखने को मिलते हैं, so it's likely that a consolidation move might continue, and these setups are often followed by explosive moves either in the direction of the breakout or in the direction of the breakdown. Also, in the last trading session of the week, that was Friday, you can clearly see that हमें निफ्टी में एक long lower wick यहाँ पर देखने को मिला है, which suggested that from the lows, Nifty saw support action. So चलिए अब हम यहाँ पर पॉसिबल केस सिनेरियोज को आउटलाइन करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट 21,905 का जो लेवल रहेगा एक सपोर्ट का निफ्टी में काम करने वाला है एंड ओनली बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल निफ्टी में फर्दर डाउनसाइड ओपन अप होगी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 21,830 फॉलोड बाय 21,666। एंड ऑन द फ्लिप साइड, अगर हमें फ्रॉम द सेम लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है एंड दिस लो स्टेज प्रोटेक्टेड, देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें इस पर्टिकुलर हाई का तो एक टेस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इफ निफ्टी ऑल्सो ब्रेक्स अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, देन हम यहाँ पर इस वाइड कैंडलस्टिक के हाई को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इट माइट बी ऑन द कार्ड्स। निफ्टी के आर्ली टाइम फ्रेम पर तो आप देख पा ही रहे होंगे दैट हमें 20 और 40 EMA के नीचे ट्रेडिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ निफ्टी डिड ट्राई टू मूव ऑन द हायर साइड बट इट फेल्ड टू डू सो, जो हमारे पास काफी एविडेंट है फ्रॉम दीज लॉन्ग अपर विक कैंडलस्टिक्स। नाउ ओवर हियर द 20 and 40 EMA हैव बीन एक्टिंग अप एज स्ट्रॉन्ग लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस
और अगर हम इन लेवल्स की बात करें, सो द फर्स्ट वन इज प्लेस्ड एट 22,082 एंड द सेकंड वन इज प्लेस्ड एट 22,162. नाउ फ्रॉम द सेम लेवल्स अगर हमें निफ्टी में कोई भी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलता है, देन ऑन द हायर साइड हम इन ईएमएस का टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ वी डू सी अ ब्रेकआउट अबव द सेम, देन हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंज ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड ओवर हियर अ पुल बैक मूव माइट प्ले आउट और अ बाउंस माइट बी इन कमिंग. एंड हमें टूवर्ड्स 22,445 एक मूव ओपन अप करते हुए निफ्टी 50 में दिख सकता है. ऑन द फ्लिप साइड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, दैट 21,905 का जो लेवल रहेगा विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर ऑन द डाउन साइड. सो इन केस ऑफ एनी ब्रेक डाउन बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल, वीकनेस परसिस्ट कर सकती है एंड हमें फर्दर लोअर लेवल्स का टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है. एंड वेल, व्हाट इज योर आउटलुक on Nifty 50? Do let me know in the comments down below. Support and resistance levels को quickly यहाँ cover कर लेते हैं. The support for Nifty is placed at 21,905, followed by 21,830, and the resistance is placed at 22,100, followed by 22,222. Let's talk about Bank Nifty on the weekly time frame. Now here हमें एक reversal देखने को मिला है from the highs of 48,161, which coincided with the harmonic potential reversal zone on the daily time frame. Also considering the fact that Bank Nifty अपने 20 EMA के close trade कर रहा है, which is placed at the levels of 46,232. So the question is it going to hold up? Well, we are yet to find out. And in case it slips below the same, that is, if it slips below this level of 20 EMA, then हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that a move towards the 40 EMA might open up, followed by the level of 44,600, which happens to be somewhere around these particular levels. बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें एक ब्यूटीफुल हार्मोनिक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला है. एंड जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, 46,616 का लेवल हम एज अ सपोर्ट कंसिडर कर रहे थे. बट यू कैन क्लियरली सी दैट ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस हमें बैंक निफ्टी में डोजी कैंडलस्टिक्स देखने को मिल रही हैं, which depicts indecision. So let's discuss the 2 possibilities around here and the likely course of action for Bank Nifty. Now usually जब हमें ऐसे declines देखने को मिलते हैं, so it creates supply pressure on the way up. So here if we talk about the resistance level, so the immediate level happens to be 47,235, followed by the level of 47,455, which means that अगर हमें इन particular lows से बैंक निफ्टी में एक रिकवरी या फिर एक बाउंस देखने को मिलता है, तो हमें वॉचफुल रहना होगा अबाउट these particular levels जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं as resistances. On the flip side, if Bank Nifty does go south, then the level of 45,855 is the level that we need to keep our eyes on. Let's talk about the hourly time frame of Bank Nifty, जहां पर आप देख सकते हैं that it is placed very well below the 20 as well as the 40 EMA. Now आप यहाँ पर देख सकते हैं that multiple times Bank Nifty tried to approach these averages, but हमें यहाँ से decline देखने को मिल रहा है. And similar is the case that is going on at the current levels. So it's crucial for Bank Nifty to surpass these particular averages on the hourly time frame, which would open up the possibility of a potential bounce in the index, जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑन द डेली टाइम फ्रेम एज वेल. यहाँ पर अगर हम इंट्राडे एक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर लेवल which is placed somewhere around the levels of 46,675 has been acting up as a strong level of resistance. And आप देख सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में continuously from this particular level एक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा था, which is evident from the long upper wicks right over here. Now in case अगर हमें इस पर्टिकुलर लेवल का ऑन द हायर साइड एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिलता है, देन उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी में एक बाउंस यहाँ पर ओपन अप हो सकता है, पोटेंशियली टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 46,880. Also do remember to be watchful of these particular lows because in case of breach of these levels, weakness might creep in.
Let's cover the support and resistance levels. The support is placed at 46,398, followed by 45,855. The resistance is placed at 47,235, followed by 47,455. निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के आउटलुक की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द डेली टाइम फ्रेम, जहां पर आप देख सकते हैं दैट हाउ ब्यूटिफुली दिस पर्टिकुलर इंडेक्स वाज प्लेस्ड वेरी वेल अबव द 20 एज वेल एज द 40 EMA. एंड ओवर हियर आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है बिलो दीज एवरेजेस. नाउ here you can see that from the lows we have seen a decent recovery, and यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं फ्राइडे का कैंडलस्टिक, it has a long lower wick which suggests that we saw decent enough support action coming in. Now here it's likely that if the lower levels hold, that is the levels of about 10,315, then हमें यहाँ पर एक पुल बैक मूव टूवर्ड्स दीज मूविंग एवरेजेस अनफोल्ड करते हुए दिख सकता है, which happens to be the level of 10,700 followed by 10,757. Let's also discuss the hourly time frame. Hourly time frame की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप clearly notice कर सकते हैं that we have a potential harmonic pattern on the hourly time frame of Nifty MidCap Select. Now why I say potential is because ये पैटर्न अभी ट्रिगर नहीं हुआ है और ये पैटर्न सिर्फ पॉइंट बी के ऊपर ट्रिगर होगा, which happens to be the level of 10,542. Till the time it is a wait and watch setup, and आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं that Nifty Midcap Select is placed below the 20 and 40 EMA. So once these levels are crossed along with point B 10,542, देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इस हार्मोनिक पैटर्न के चलते हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 10,757 फॉलोड बाय 10,854 तक का एक टेस्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है, विच माइट अनफोल्ड एज अ पुल बैक मूव और अ बाउंस बैक ऑन द हायर साइड. Once again, do remember that ये सिर्फ एक potential pattern है and it is not yet been triggered. Also, the invalidation level for this pattern happens to be point C, which is the low of 10,320 approximately. Which means that if this pattern breaks this particular low, then हम इसे further consider नहीं करने वाले हैं. And this might as well be an indication that further Nifty Midcap Select में a decline might open up. And well, Let's call it a week, and I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Also, do let me know in the comments down below that what stocks are on your watch list for the upcoming week. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.